Question 1. A barometer is constructed using a liquid of density 760 kg per meter cube. What would be the height of the liquid column when a mercury barometer read is 76 centimeter? Density of mercury is given. So we know height of liquid in mercury column barometer is given as Hm is equals to 0.76 meter. If height of liquid in liquid column be HL, then pressure in liquid column is equals to pressure at mercury reading. That is rho L G H L is equals to rho M G H M, where rho L is density of liquid and HL is height of liquid column, and rho M is density of mercury and HM is height of mercury column. तो HL आएगा यहाँ से rho M HM upon rho L, that is 13,600 into HM, that is 0.76 upon rho L, that is 760, is equals to 13.6 meter. 13.6 meter is in option B. Next question. In a YouTube as shown in figure, water and oil are in the left side and right side of the tube respectively. The height is from the bottom for water and oil columns are 15 centimeter and 20 centimeter respectively. The density of oil is given is density of water is 1000 kg per meter cube. दिया है यूट्यूब जो है इस साइड वाटर है और इस साइड ऑयल है ऑफ 20 सेंटीमीटर. तो वी नो एट सेम हाइट pressure is same, that is at same horizontal level pressure is same. So pressure at bottom due to water column of height 15 centimeter will be equal to pressure at bottom due to oil column of height 20 centimeter. So rho W G H W is equals to rho O G H O, where rho W is density of water and H W is height of water column, and rho O is density of oil and H O is height of oil column. यहाँ से आएगा density of oil is equals to density of water into HW upon H naught, that is 1000 into 15 by 20, क्योंकि HW is 15 और H naught is यानी H oil is 20. तो यहाँ से आएगा 750 kg per meter cube, that is in option B. Next question. A U2 with both ends open to the atmosphere is partially filled with water. Oil, which is immiscible with water, is poured into the one side until it stands at a distance of the 10 mm above the water level on the other side. Meanwhile, the water rises by 65 mm from its original level. The density of oil is निकालना है density of oil. ये है initial water level, ये है final water level. We know at same height pressure is same, that is pressure of 2 points lying on the same horizontal level is same here. Hence at here pressure at B is equals to pressure at C, because they are both lying on the same horizontal line BC. तो यहाँ से आएगा pressure at B, that is equal to 928 kg per meter cube. Next question. Two non-mixing liquids of densities rho and n rho, where n is greater than 1, are put in a container. The height of each liquid be h. A solid cylinder of length L and density D is put in this container. The cylinder floats with axis
with its axis vertical and length PL, where P is less than 1 in the denser liquid. The density D is equal to, ये जो है डायग्राम दिया है, दो लिक्विड्स का ऊपर है लाइटर लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो और नीचे है डेंसर लिक्विड दैट इज एन रो डेंसिटी, और ये जो है सिलेंडर इसका डेंसिटी डी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और एल लेंथ। ये सबमर्ज है दोनों फ्लूइड्स में। P into L is length of this cylinder is submerged in liquid of density n rho, and 1 minus P into L length is submerged in the liquid of density rho. So applying Archimedes principle, weight of cylinder is equal to upthrust 1 plus upthrust 2. तो यहाँ से weight of cylinder A L D G is equal to 1 minus P into L A rho G, upthrust 2 P L A N rho G. This will be upthrust by N rho liquid or upthrust by rho liquid of density rho, और ये इसका वेट। तो यहाँ से आएगा D इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी इंटू रो प्लस पी एन रो, दैट इज रो प्लस एन माइनस 1 पी रो। तो यहाँ से रो कॉमन निकालेंगे तो D विल बी इक्वल टू रो इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू पी, दैट इज इन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रॉक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओशन इज 2700 मीटर. The compressibility of water is 45.4 into 10 power minus 11 Pascal inverse, and the density of water is 10 power 3 kg per meter cube. What fractional compression of water will be obtained at the bottom of the ocean? निकालना क्या है fractional compression. We know the pressure at the bottom of the ocean P is equals to rho G D. तो rho G is 10 meter per second square and depth is 2700 मीटर। तो यहाँ से आएगा प्रेशर इज इक्वल 27 into 10 power 6 पास्कल। फ्रैक्शनल कंप्रेशन इज गिवन बाय कंप्रेसिबिलिटी इनटू प्रेशर। तो यहाँ से कंप्रेसिबिलिटी इज गिवन 45.4 into 10 power minus 11 एंड प्रेशर इज 27 into 10 power 6। तो यहाँ से आएगा फ्रैक्शनल कंप्रेशन 1.2 into 10 power minus 2, दैट इज इन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the velocity of small ball of mass m and density d when dropped in a container filled with glycerine becomes constant. Velocity becomes constant after some time if the density of glycerine is d by 2, then the viscous force acting on the ball will be. We know viscous force is equal to weight minus buoyant force. तो यहाँ से weight is vdg, that is volume into density into g, that is gravitational acceleration, by minus buoyant force is v d by 2 into g, क्योंकि d by 2 is density of glycerine where v is volume of submerged body. तो यहाँ से viscous force will be equal to v dg minus v d by 2 g, that will be equal to v dg by 2. तो as we know d is m by v, mass per unit volume. तो यहाँ से d को रिप्लेस करेंगे m by v, तो यहाँ से viscous force will be equal to mg by 2, that is in option A. Next question, two small spherical metal balls having equal masses are made from materials of densities rho 1 and rho 2, where rho 1 is 8, rho 2 and have radii of 1 mm and 2 mm respectively. They are made to fall vertically from the rest in viscous medium whose coefficient of viscosity equals eta and whose density is 0.1 rho 2. The ratio of their terminal velocities will be. निकालना है ratio of terminal velocities. We know terminal velocity in a viscous fluid is given by Vt is equals to 2 into rho minus sigma r square g upon 9 eta, where rho is density of metal ball, sigma is density of viscous medium, r is radii of the ball, eta is coefficient of viscosity of medium. For first spherical ball Vt1, that is terminal velocity for ball 1 will be given as 2 into 8 sigma 8
रो टू माइनस सिग्मा इंटू R1 स्क्वायर G अपॉन 9 ईटा. Similarly, for second ball terminal velocity Vt2 is given as 2 into 2 रो टू माइनस सिग्मा इंटू R2 स्क्वायर G अपॉन 9 ईटा. तो यहाँ से आएगा 2 इंटू रो टू माइनस सिग्मा इंटू 4R1 स्क्वायर इंटू G अपॉन 9 ईटा, क्योंकि R2 जो है दैट इज इक्वल टू 2R1. R2 इज इक्वल टू 2R1. तो यहाँ से आएगा Vt1 बाई Vt2 निकालना है, तो यहाँ से आएगा दैट इज Vt1 और ये है Vt2. तो यहाँ से आएगा Vt1 बाई Vt2 दैट विल बी इक्वल टू 8 रो टू माइनस सिग्मा अपॉन 4 रो टू माइनस सिग्मा. सिंप्लीफाई करके आएगा और सिग्मा को रिप्लेस करेंगे 0.1 रो टू दैट इज गिवन इन क्वेश्चन. तो सिंप्लीफाई करके आएगा 7.9 रो टू अपॉन 4 इंटू 0.9 रो टू दैट विल बी इक्वल टू 79 अपॉन 36. दैट इज इन ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A small hole of area of cross section 2 mm square is present near the bottom of a fully filled open tank of height 2 meter. Take G is equals to 10 meter per second. The rate of flow of water through the open hole would be. निकालना है rate of flow. ये है 2 मीटर टैंक और नीचे है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहाँ से पानी बाहर आ रहा है दैट इज 2 mm स्क्वायर. तो वी नो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड विल बी गिवन एज V इज इक्वल्स टू √2GH. √2G दिया है 10 और H दिया है 2 मीटर. तो यहाँ से आएगा वेलोसिटी विल बी 6.32 मीटर पर सेकंड. और रेट ऑफ फ्लो दैट इज Q इज इक्वल्स टू AV. A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और V इज वेलोसिटी. दैट विल बी एरिया जो दिया है 2 mm स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 10 पावर -6 और वेलोसिटी है 6.32. तो यहाँ से आएगा 12.6 इंटू 10 पावर -6 मीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो इज इन मीटर क्यूब पर सेकंड. दैट इज इन ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A small sphere of radius r falls from rest in a viscous liquid. As a result, heat is produced due to the viscous force. The rate of production of heat when the sphere attains its terminal velocity. निकालना क्या है? Rate of production of heat when sphere attains its terminal velocity is proportional to. वो किसके proportional है? We know rate of heat generation is equal to rate of work done by the viscous force which in turn is equal to power. तो यहाँ से आएगा dq upon dt is equal to f into vt. यहाँ जहाँ पे f is viscous force और vt is terminal velocity. We know viscous force is 6 pi eta r vt which implies dq by dt that is rate of heat generation will be equal to 6 pi eta r vt इंटू vt, क्योंकि 4 जो है 6 पाई ईटा आर वी टी और डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एफ इंटू वी टी. तो यहाँ से आएगा डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी इंटू वी टी दैट इज 6 पाई ईटा आर वी टी स्क्वायर. ऑल्सो वी नो वी टी इज इक्वल टू 2 इंटू रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर जी अपॉन 9 ईटा विच मीन्स velocity vt is यानी terminal velocity is proportional to r square. तो dq by dt is proportional to r into r square का whole square, क्योंकि r जो है that is in force. force में जो है r है तो यहाँ से r आएगा और vt जो है vt में r square है तो इसका भी square है. यहाँ से तो डी क्यू बाई डी टी विल बी प्रपोर्शनल टू आर पावर
5. That is in option A. A is the right answer.